Mr. Sanjay Singh, I may have to name you. Can you keep quiet for a moment? It has become your habit to rise and raise a point. It is not a public street. What is Gaya Samadhi? Read Constitution, get guidance, get enlightened, so that people do not laugh at us. Raghav Chadha, listen to it. You need to understand. आखिरकार साथियों, दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर जो ऑर्डिनेंस लाया गया था उसको कानून बनाने के लिए राज्यसभा में खुद राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने ही उनको टेबल्ड कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और राघव चड्ढा ने इसका भारी विरोध किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, उसको हमसे नहीं छीनना चाहिए, ये संविधान की अवहेलना है, आप संविधान में ऐसे बदलाव नहीं कर सकते, ये गैर संवैधानिक है। ये बड़ी बहस चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के जो दोनों के दोनों राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ उनके साथ हुई। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। Statutory resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 promulgated by the President of India on 19th of May 2023 and consideration. Please, please let me. Are you? Can't you have some decorum? Can't you have some decorum on this? On. Please take your seat. Take your. Please take your seat. Please take your seat. He wants. Dr. Keshav Rao wants to raise a point of order. Take your seat. Take your seat. I allow him. Please take. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Please take your seat. Please take your seat. Honorable members, I have said on number of occasions, I give time to everyone in accordance with rules. This house is the upper house. This house is the house of elders. Our conduct is being watched by more than 1.3 billion people. We have to exemplify our conduct so that we can be appreciated. Can you keep quiet for a moment? It has become your habit to rise and raise a point. I give time every time. It is not a public street. It is not a platform. Keep your silence, please. No. Dr. Keshara, what is Gaya Samadhi? Read Constitution, get guidance, get enlightened, so that people do not laugh at us. What is unconstitutional is not in a word. That is why you need to study, Dr. Keshav. If a court takes up the issue which the House is discussing, do we allow? That is, I am leaving it to you. Constitution. One second. Honorable members, I need to inform you that Dr. Keshav has raised a good issue. And the issue is that if a matter is pending before a court of law, should this House be considering? Am I right? Again, it has already taken up, that is the sub judice. Today, yesterday only, it has taken up and referred it to I get your point. That is the Now, honorable members, the entire country has to be enlightened by us. The entire country has to get our message. What does the Constitution say on this? There is a constitutional prescription that puts a bar on discussion in the House in a very qualified manner. I had the occasion to give my ruling on a point of order that this House is entitled to discuss everything under the planet with one restriction, and that restriction, honorable members, is germane to the issue Dr. Keshav raised, and that is Article 121. It is for this House to generate light all around. It is for this House to clear the confusion,
to clear the cloudy weather. And Article 121 says restriction on discussion in Parliament. Am I clear, sir? So the only restriction generated in the Parliament has been given to us by our founding fathers, and that is no discussion. No discussion. Raghav Chadha, listen to it. You need to understand. No discussion, honorable members, no discussion shall take place in Parliament. No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of the High Court in the discharge of his duties, and that is also restricted. That can also be done, but there is another method, and that is except upon a motion for presenting address to the President praying for removal of the judge as hereinafter provided. Honorable member, one second. Let me conclude first. Let me conclude. Therefore, the concept of sub judice is totally misconceived. I know, sit down. Don't talk on an issue on which you are not prepared. No. Sir, honorable members, honorable. संजय सिंह और राघव चड्ढा बार बार कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब आप ये गैर संवैधानिक काम क्यों कर रहे हैं, इस बिल को आप क्यों लेकर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर डिसीजन दिया था कि ये चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए और उसको अब एक संवैधानिक पीठ के पास भेज भी दिया है। फिर भी एक सांसद साहब खड़े होते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जज का जो कंडक्ट होता है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उनके कंडक्ट को लेकर, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के दौरान जो उनका कंडक्ट है उसको लेकर सदन में चर्चा नहीं हो सकती अनटिल अनलेस उसके खिलाफ कोई उसको रिमूवल का प्रस्ताव सदन में न चल रहा हो। ये चीज़ें 10वीं कक्षा में कोई भी पढ़ सकता है, सबको इस बातों को पता है। इसको बेस बनाकर एक बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर चेयरमैन साहब सबको दे रहे हैं कि देखिए अपने आप को इंटाइटल्ड कीजिए, 130 करोड़ लोग हमें देख रहे हैं, इस तरह की बातों का हमें जानकारी होगी कि हम सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि देख सांसदों को इतनी नॉलेज है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जो बयानात आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो कंडक्ट है उसको संदर्भ में नहीं चर्चा करना है। चेयरमैन साहब सांसद जो संजय सिंह साहब हैं उन्होंने उसका जिक्र किया था जो ऑलरेडी डिसीजन दिया जा चुका है कि चुनी हुई सरकार के पक्ष में ही होना चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होने के पास, ताकि प्रशासन की जवाबदेही तय की जा सके। मिस्टर संजय सिंह, I may have to name you. Take your seat. I have not given you permission to rise. Mr. Chadha, you are not on your seat. No. Is it the conduct you learnt? No. Is it your conduct that you will travel all over the house? I can tell you, take your seat. Don't run down your reputation. Sit down. You can't behave, Raghav Chadha, like a delinquent student. आपका You ध्यान must learn to be decorous. Take your seat when others are speaking. That is the minimum requirement. Raghav, take your seat. Just one second, Raghav. Is something wrong with your seat? Every time you jump. संजय सिंह ने और राघव चड्ढा ने, आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि देखिए इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं, आप इस बिल को नए लेकर आए राज्यसभा में, इसको कानून बनाने की कोशिश ना करें, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, संवैधानिक पीठ इसको जांचने वाली है, उसका तो वेट कर लीजिए। अगर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को न्यायोचित नहीं ठहराया, अगर इस बिल को संवैधानिक पीठ ने संविधान की कसौटी पर खरा नहीं पाया, तो फिर से आप इसको कैंसिल करते फिरोगे। किस लिए आप संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं? मणिपुर सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? दिल्ली को लेकर इतना सीरियस क्यों है? उन पावर को अपने हाथ में लेने के लिए आप बड़ी तीखी बहस हुई। चेयरमैन साहब ने मजाक में भी और कुछ और स्टाइल में भी बड़ा ही व्यंग्य राघव चड्ढा और संजय सिंह के पास किया और बार बार कहा भी मैं तुम्हें नेम कर दूंगा, तुम्हारी कुर्सी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? इस तरह के वक्तव्य और उनके पीछे की मंशा क्या थी? जो सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही थी उनका गोल मोल जवाब देना और बहकाना एक तरीके से, और उन्हीं को लेक्चर देना। सांसदों को भी पता था, देश की जनता को भी पता था, हमें भी महसूस हो रहा था। आप भी सुनोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि एक ढसोकलेबाजी कर रखी थी ताकि ये बिल हम आराम से पेश कर सकें।
किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, चाहे वो असंवैधानिक हो या अलोकतांत्रिक हो, या इसके समाज की सच्चाई है। I have to inform the members that the Business Advisory Committee, in its meeting held yesterday, the 20th of July 2023, has allotted time for government, legislative and other business. The report of the Business Advisory Committee be taken to be laid on the table of the House. The House is urgent to meet at 1100 hours on Monday, the 24th July, 1971. You are not on your seat.